we started talking about bonds. We started talking about different valuation concept first, and then we said intrinsic value is a concept which we are interested in. Valuation का वो concept जिसमें हम लोग interested है उसको बोलते हैं intrinsic value. Intrinsic value का मतलब क्या है? Intrinsic value means the value an asset should have, ought to have, keeping in mind all the valuation factors. यानी वो फैक्टर जो उसकी वैल्यू को आगे या पीछे करेगा, अफेक्ट करेगा, उनको दिमाग में रखते हुए किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, हम यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, बाकी ऐसा नहीं, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, मतलब अगर हम कहते हैं बॉन्ड, तो बॉन्ड की क्या वैल्यू होनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है, गॉट द आइडिया? देन वी टॉक्ड अबाउट सम टर्म्स regarding bonds. We explained that bond is a long-term debt instrument, okay, where you have a face value or maturity value which is written on the bond, normally 1,000, and you will get it back at the end of maturity. So there can be a bond which has no maturity, so in that case you will not get it back, but still it will have a face value or that maturity value. Then we said that there is a coupon related with bond. Once again, not necessary that there is a coupon. We will study today that there are bonds which have no coupon. They are called as no coupon bond या zero coupon bond. तो ये भी हो सकता है. तो coupon क्या है? Coupon is the interest which we are getting on the bond. Okay. So in other words, if you invest or if you buy a bond, if you lend money to a corporation through a bond or to any organization through a bond, you will be getting some return over it, and that would be your coupon rate. वो आपका कूपन रेट होगा. इसके अलावा भी जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी वो भी आपका रिटर्न होगा, वो भी आप पैसे कमाएंगे उससे. लेकिन जो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कूपन. इट विल वंस अगेन बी स्टेटेड ऑन द बॉन्ड. बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है कि व्हाट इज द कूपन रेट. टुडे वी नीड टू टॉक अबाउट डिस्काउंट रेट. तो फिर ये डिस्काउंट रेट क्या है? देखिए, वो भी तो कूपन रेट हमने कहा वो उसका इंटरेस्ट रेट है. जिस इंटरेस्ट रेट के मुताबिक द ऑर्गेनाइजेशन पेज मी, the borrower pays me, जो मुझे वो पैसे देता है. तो अगर let's say this is my bond and if it pays me 10%, so it is actually paying me 100 rupees, ये 100 रुपए मुझे दे रहा है. तो एक तो तरीका ये है कि I look at this coupon rate and then multiply it with the face value, it gives me the coupon amount कि कितना coupon है. या मैं ये कर सकता हूँ कि जो मुझे coupon मिलता है इसको हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, इस तरह करता है. सो दिस विल गिव मी द इंटरेस्ट रेट कि उसका कूपन रेट क्या है. अच्छा, ये भी हो गया. अब डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट और कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक, डिस्काउंट रेट और कैपिटलाइजेशन रेट इसका दूसरा नाम है. इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क ऑफ दैट बॉन्ड. आई इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड, आई बाय अ बॉन्ड. अब वो कंपनी कितनी रिस्की, वो कितनी रिस्की, ये चीज डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द डिस्काउंट रेट और द कैपिटलाइजेशन रेट, एंड आई नीड टू कीप इन माइंड द रिस्क फ्री रेट. इफ यू रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रेट, सो आई यूज्ड दिस नोटेशन आरएफ. सो आरएफ इज एक्चुअली रिस्क फ्री रेट. रिस्क फ्री रेट क्या होता है? हमने कहा था कि वो जो जहां पे रिस्क नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिस्क कोई नहीं होता, वो भी आपको कुछ ना कुछ, इट इज गिविंग यू सम रिटर्न. इट इज गिविंग यू सम रिटर्न. ये नहीं है कि रिस्क फ्री वुड गिव यू जीरो रिटर्न बिकॉज़ देयर इज नो रिस्क. नहीं, द रिटर्न विल बी लेस एंड इट विल बी द लोएस्ट रिटर्न. ठीक है, सो दैट्स व्हाई रिस्क फ्री वुड बी द लोएस्ट रिटर्न. बट रिमेंबर देयर इज नो रिस्क. सो नाउ इफ यू टेक सम रिस्क, फिर अगर आप रिस्क लेते हैं तो चाहिए कि आपका रिटर्न उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए. ठीक है, so risk free rate plus a premium for what? For taking risk. तो इसका मतलब ये हुआ कि this discount rate or capitalization rate would be equal to the risk free rate and risk premium. ठीक है, फिलहाल इसको इस तरह, बाद में हम इसकी प्रॉपर वेरिएशन पढ़ेंगे. risk premium, and risk premium would actually mean how much risk you are taking in that particular bond, let's say, or instrument. सही है, जितना उसका रिस्क है उसके मुताबिक उसका रिस्क प्रीमियम है. ये बाद में पढ़ेंगे कि इस रिस्क प्रीमियम को कैलकुलेट किस तरह करते हैं, बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन है. एंड
risk free, this would decide the discount rate. अब सिंपल वर्ड्स में बताओ ये क्या चीज है? सिंपल वर्ड्स में ये वो चीज है जब कभी आप उन चीजों को वो नहीं करते थे कि आप कहते थे कि लेट्स से दिस इज द टाइमलाइन, दिस इज टाइम 0 और द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज end time period and this is the future value. If I ask you to calculate the present value, what do? Discount. You discount it using a discount rate. Discount rate इस्तेमाल करते थे ना? मैंने ये कहा था कि जब आप लोग कंपाउंड करते हैं, so you use a compounding rate. Compounding rate आप इस्तेमाल करते हैं. जब डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट रेट आप इस्तेमाल करते हैं. और अब तक हमने कहा था ये क्वेश्चन में गिवन होता था कि द डिस्काउंट रेट इज 10%, डिस्काउंट रेट इज 8%. अब वो आपको ये कह रहा है कि जो बॉन्ड के अंदर डिस्काउंट रेट है वो ये चीज है कि अगर मैं इसको डिस्काउंट करूं जिस रेट पे, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज द डिस्काउंट रेट. सिंपल. समझ आ गई? ये डिस्काउंट रेट क्या चीज है? ये सिंपल वो रेट है जिस पे ये डिस्काउंटिंग होगी. ठीक? वेयर एज कूपन रेट इज व्हाट? Is the interest which you would be earning on the bond. होगा वो भी interest होगा, लेकिन that would be coupon rate. ये भी interest है, but that is a discount rate. दोनों के दरमियान फर्क कर लें इसे. Coupon rate is what we are getting from the organization. Discount rate or capitalization rate is the rate which I'll be using for my risk and risk premium. ठीक? Which is normally used for compounding or discounting. Got the idea? Yes. Clear है सब कुछ? जाए आगे? Yes. Start करें? Okay. Now let's start. Now let's talk about bonds now. Now, do you remember we talked about perpetuity? We did? Yes, sir. You don't remember? नहीं, आपने सिर्फ इस तरह बताया था कि उस हमेशा के लिए. और उसका फॉर्मूला नहीं बताया? How is it possible? Sure. E वाला बताया था उसमें एक्सपोनेंशियल वो यूज होता है. वो तो कंटिन्यूटी के लिए. Continuity. तो continuity के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इसको पॉज करें. आगे बढ़ गया. Okay. So now let's go back to perpetuity. This is from chapter number 3, which we have missed. Okay. So now what is perpetuity? Perpetuity, जिस तरह एनविटी है, you get payments, but you get it for a specified time period. So you calculate के n कितना है. Now let's say there is a series of payment or receipts, but it goes on forever, infinity. So perpetuity is an ordinary annuity whose payment or receipts continue forever. So then how would you calculate the present value? अगर मैं आपसे कहूँ कि this is your timeline, this is time 0, you will get 100 at the end of first year, 100 at the end of second year, and you will get it till infinity. आप लोग क्या करते थे इसके लिए कि present value, if you need to find out the present value of annuity, what you used to do, इसको discount करते थे. Yes. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि it is forever, then एनपी क्या वैल्यू है? n की क्या वैल्यू है? ठीक? So for that, when this n approaches infinity, मतलब ये जब n infinity पे चला जाता है, क्योंकि देखें हम लोगों ने करना होता है 1 plus I raised to power of n ना. So if you do it 1 plus I raised to power of infinity, so as it approaches infinity, so it becomes this. Present value of annuity equals R, ठीक? R जो ये इंस्टॉलमेंट है, receipt of payment divided by R. बस simple. So this is what perpetuity looks like. सही है? Clear हो गया? Future value find out करनी है. Can you find out the future value? Just think about it. Future value आप कब find out करेंगे? Future value तो होती है जब वो वहाँ पे terminate होगा ना. तो ये terminate कब होगा? 100 years, 200 years, 1000 years. You don't know. There is a perpetuity. You have to find the future value after 10 years. तो फिर after 10 years तो फिर तो then it's an annuity ना? It is हाँ normal formula because it has a life then. Yes. ठीक है? Perpetuity का तो idea ये है कि it continues forever. ठीक है?
For example, you buy the share of a company, and according to our assumption, company is a going concern. तो फिर कब तक आपको डिविडेंड मिलेगा? कब तक मिलेगा? Forever. ठीक है? तो forever, अगर मैं आपसे पूछा आप इसका फाइंड आउट करें फ्यूचर वैल्यू का, आप कहेंगे सर फ्यूचर वैल्यू कब फाइंड आउट करूँ, ये कब खत्म होगा? ये तो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि we assume that the company is a going concern, business is a going concern. तो मैं आपसे कहूँगा let's find out the present value. आप कहेंगे सर प्रेजेंट वैल्यू भी कैसे फाइंड आउट करूँ? रेज़ टू पावर ऑफ n होता है, रेज़ टू पावर ऑफ इंफिनिटी कैसे करूँगा? So this is the formula which you use. ठीक है? Got the idea? Got the idea? Okay. So now let's come back to our bonds. अब दोबारा bonds की तरफ जाते हैं, और bonds में एक concept है which is called as perpetual bond. Perpetual bond. ठीक है? Now, so perpetual bond, just like the idea of perpetuity, that it will continue forever. So bond, we said, has a life. We said bond actually has a life. 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, 25 years, 30 years भी मिल जाएंगे बॉन्ड. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि this bond is a perpetual bond, infinity तक है, तो फिर आप कहेंगे कि infinity तक है, so how would I find out the present value? वही मसला कि फिर present value को कैसे find out करें? तो फिर you will resort to the same formula. Okay, if you need to find out the present value of a perpetual bond, so you will use the formula for a perpetuity, according to which you will divide the receipt by the interest. Okay? Now, when there is a bond, what does the bond give you? अभी आपको बताता हूँ. Coupon. And coupon is denoted as by I. ठीक है? So if it's a 1000 bond face value and it is giving you coupon rate of 10%, so how much you will be getting from the bond every year? 100. So your coupon is equal to 100 divided by. अच्छा. फिर गलती कर. 10% is what? Coupon. और मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्लाइड में क्या बताया कि एक is coupon rate, which is the interest which you are getting. Yes. But if you are discounting it, you will be using Discount rate. हाँ, जिसका नाम या डिस्काउंट रेट है या मुझे अभी पता है 2 मिनट ठीक है. And this is different from coupon rate. So that means divided by I is actually discount rate or capitalization rate, not coupon rate. So it will not be 10%. 10% नहीं हो सकता. पहले तो ये दिमाग में रखना. हो भी सकता है 10% हो, लेकिन ये कहने की बात कर रहा हूँ कि ये नहीं होगा, ये कुछ और होगा. ठीक है? और ये डिनोट किससे होगा? Once again, ये डिनोट किससे होगा? इसको तो हम डिनोट, we used to denote it by I ना. इसको हम डिनोट करेंगे by K. Cost. ठीक है? Cost of, अब बताता हूँ. Normally it is cost of debt. Cost of debt. Normally we call it as cost of debt. So this is cost of debt. ठीक है? This is cost of debt. और ये अलग से करना होगा. कूपन अलग होगा क्वेश्चन में, एंड कॉस्ट ऑफ डेट और कैपिटलाइजेशन रेट और डिस्काउंट रेट, इस तरह का नाम होगा. ये नाम, ये अलग होगा. मिक्स नहीं करना. ऐसा ना हो कि इसको भी 10% से मल्टीप्लाई करके 100 आप कहेंगे कूपन, और इसको भी डिवाइड बाय 10% आप कहेंगे बस ठीक है क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नहीं, दिस इज नॉट हाउ यू डू. ठीक है? दिस विल बी डिफरेंट. हो सकता है क्वेश्चन में दोनों 10% हो, पॉसिबल. हो सकता है 11% हो सकता है मैं 5 दे दूं, हो सकता है मैं 6 दे दूं, कुछ भी दे सकता हूं. ठीक है? गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? ओके. So this is what the formula will look like. Now in case if you want to see how it will be calculated, so if it is still infinity और 100 rupees आपको मिल रहे हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, so it's not possible. So we simply use this formula, according to which it will be I divided by KD.
सही है? तो वही परपेचुइटी का एक फॉर्मूला है, इट्स द सेम फॉर्मूला बट द नोटेशन इज डिफरेंट. वी denote it by I, which is the coupon, and KD, which is the discount rate. In perpetuity, we used to say call it R, which is the installment, divided by I, once again which was the discount rate. वहाँ पे भी ये discount rate होता था, ठीक है? यहाँ पर भी discount rate है, लेकिन ऊपर coupon rate है, which is coupon है, which is something else. सही है? Sir, I divided by I and capital I divided by cost of debt. ये दोनों सेम है या? ये दोनों सेम है. देखिए कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, सिर्फ नोटेशन डिफरेंट है. वहां पे मैं इसको बोलता था आर, ये एक परपेचुइटी में इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा बॉन्ड में. बॉन्ड में, और कौन से बॉन्ड में? परपेचुअल बॉन्ड. परपेचुअल बॉन्ड का ये फॉर्मूला है, बाकी बॉन्ड्स हम देखेंगे ये फॉर्मूला नहीं है, परपेचुअल बॉन्ड का ये फॉर्मूला है, ठीक है? क्योंकि परपेचुअल बॉन्ड और परपेचुइटी एक किस्म की सेम चीज है. क्योंकि परपेचुइटी हमने कहा कि ऐसी पेमेंट या रिसीट है which goes on forever, और परपेचुअल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा forever. तो वो भी रिसीट हो गई ना, तो वो भी आर हो गया, लेकिन उसको आर से नहीं लिखना, उसको आई से डिनोट करना है, which means कूपन. और इसको डिस्काउंट को आई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे इस डिस्काउंट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, केडी. क्लियर? क्लियर क्लास? जाए आगे? Okay, so that was perpetual bond. A perpetual bond is a bond that never matures because it goes on forever. So it doesn't mature. So infinity mature होगा तो वो उसके पैसे वापस मिलेंगे ना 1000 रुपए. तो वो mature ही नहीं होगा तो 1000 रुपए तो वापस नहीं मिलेगा. ठीक है? आपको सिर्फ मिलेगा इसके ऊपर interest. Forever मिलता जाएगा. It has an infinite life and this is how you calculate. Clear? So now let's go. Let's continue and let's do a question and then we will move on. Bond P has 1000 face value and provides an 8% coupon. So now the coupon is 8%, which means 8% is 80, which will be 0.08 coupon. which will be coupon. 0.08 आ जाएगा, 0.08 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 के साथ, तो ये आपको देगा 80. वो पैसे जो आपको हर साल जो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है. हाँ, जो हर साल आपको जो आप कहते हैं ना कि मुझे इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है, तो वो ये मिल रहा है, वो 80 रुपए आपको हर साल मिलेगा. आगे चले. The appropriate discount rate is 10%. अब ये क्या हो गया? ये इसका ये जो डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है? ये हो गया डिस्काउंट is 10%. What is the value of the perpetual bond? G class 80 divided by 0.1 10%, which is 0.1 equals 800. ये intrinsic value of this perpetual bond. सही है? क्लियर है? आसान है? इजी सो फार? जाए आगे? Okay, let's move on. Now, let's talk about a bond which is called as a non-zero coupon paying bond. अब मैंने आपको तुम्हें पहले बताया था कि एक zero coupon bond होता है, which means the coupon rate is equal to zero. No interest. No coupon, no interest. अब फिर interest है. Coupon. Interest देखें होते दोनों interest है, but when we say interest, you will say which interest? The interest which we are receiving or the discount rate? फिर ये मसला होगा ना. So let's call this coupon, जो interest मिलेगा मुझे, और जिससे डिस्काउंट करूंगा let's call it discount rate. दोनों को अलग अलग नाम है ताकि आपको आसानी रहे, कंफ्यूजन ना. Okay, so now non-zero coupon, non-zero का coupon का मतलब है कि zero नहीं है, which means there is some coupon rate. 1%, 2%, 3%, कुछ भी हो सकता है. It can be anything. 1000 and coupon equals 20%, coupon equals 10%, 5%, 8%, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? And it also has a life. So let's say कि coupon कितना रखें इसका? 6% के. And let's say the life is 5 years. चलो, ठीक है? Let's say the life is 5 years. So for 5 years, what will happen? If you go for this bond, what will happen for 5 years? You will receive 60 each year. You will receive at the end of each year 6% multiplied by 1000 equals 60 rupees Yes, sir. every year for 5 years. 5 years. So this is what the timeline will look like. 0, 1, 2, 3, 4,
5. 1, 2, 3, 4, 5, 60, 60, 60, 60, 60. What will happen at the end of the 5th year? बॉन्ड भी मैच्योर हो जाएगा। बॉन्ड भी मैच्योर हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट 1000 हमें वापस इंटरेस्ट तो मिल रहा है, कूपन वो प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगी। जो बॉन्ड का प्रिंसिपल फिर प्रिंसिपल तो देखो उस वक्त कहते थे जब वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी करते थे। अभी इसके नाम क्या है, आपको मैंने नाम सिखाए हैं, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, और फेस वैल्यू। सो वी विल गेट द मैच्योरिटी वैल्यू बैक एज वेल। We will get, so that means at the end of 5th year we will get 60 as coupon and 1000 as maturity value. So you will get 1060. Now if I want you to calculate the intrinsic value of the bond, how would you calculate it? आप क्या करेंगे? Intrinsic value क्या होगी? coupon divided by cost of debt। Why coupon divided by cost of debt? ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे हम? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किस चीज की? परपेचुअल किस चीज की? परपेचुअल बॉन्ड। Why did we use this one? ये तो परपेचुअल नहीं है। Why did we use this one? हमने ये क्यों इस्तेमाल किया था ये वाला फॉर्मूला? मैंने आपको क्या कहा था क्यों इस्तेमाल किया? फ्यूचर वैल्यू गिवन नहीं होती थी। फ्यूचर वैल्यू गिवन नहीं होती थी मतलब। फ्यूचर वैल्यू नहीं होती थी। क्यों हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे? इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना। इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक Bond है? mature एक मिनट, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ डू यू फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड? coupon divided by cost of debt। I'm not asking you the formula. I'm asking you how you will find the intrinsic value of a bond. What is the concept? What will you calculate? What are you calculating? हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं? Actual worth of debt bond। Worth of the bond. And how do you calculate the worth of the bond? So what is it worth? किस तरह पता चलता है कि वो कितनी worth है उसकी? क्या चीज फाइंड आउट करो? उसका क्या फाइंड आउट? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किस चीज की? परपेचुअल बॉन्ड। बॉन्ड की तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करो, लेकिन किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू? किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू जो फ्यूचर में मुझे क्या इंटरेस्ट मिल रहा है और मैच्योरिटी और मैच्योरिटी मिल रही है। तो ये कहना कि बॉन्ड्स इंट्रिंसिक वैल्यू मींस दैट आई नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द पेमेंट्स व्हिच आई एम रिसीविंग फ्रॉम द बॉन्ड। बॉन्ड से मुझे कितने पैसे मिलेंगे? मुझे एक साल बाद बॉन्ड से मिलता है 60 रुपए, ठीक, 100 रुपए, 120 रुपए। उसकी आज के दिन वैल्यू देती है, उसको मैं डिस्काउंट करता हूं। फिर दूसरे साल मिलता है, उसको डिस्काउंट करता हूं। फिर तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, 5 सालों में जितने पैसे मिलेंगे उन सबको डिस्काउंट करना। इसका मतलब इस बॉन्ड की इतनी वैल्यू होनी चाहिए आज, ठीक है? आपने थोड़ी देर पहले कहा उस बॉन्ड की होनी चाहिए 800 वैल्यू। मार्केट में इट्स बीइंग सोल्ड फॉर ₹750। सो इज इट वर्थ इट? यस। यस। आप कहते हैं यार इसकी वैल्यू होनी चाहिए 800, आप हिसाब लगाते हैं, आप कहते हैं 800, और आप जब जाते हैं मार्केट में वो कोई चीज 700 की मिल जाए तो आप खुश नहीं होंगे। यस, इट्स गुड डील। मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 700 का होना चाहिए। व्हाई? इससे मुझे जो पैसे आएंगे उनको मैंने डिस्काउंट किया तो उसकी वैल्यू बनती है 800, ठीक, लेकिन मुझे मिल गया वो 700 का, तो अच्छी बात है, सस्ता मिला, ठीक। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बॉन्ड। नाउ दिस इज a bond with a finite life, infinite नहीं, एक fixed life। तो अगर इसमें मुझे ये पेमेंट्स मिल रही हैं, so how would I find out the intrinsic value? मैच्योरिटी वैल्यू और जो इंटरेस्ट हमें रिसिप्ट में असाइन मिलता है। फिर इंटरेस्ट, कूपन जो कूपन मुझे मिलता है और जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है मुझे, फिर उसको क्या वो 1300 बनते हैं टोटल। मुझे पता कितने बनते हैं आपके सामने 1000 को और ये सारा लिखा हुआ है। यस सर 1300 बनते हैं टोटल। अच्छा, तो फिर देन जी कॉस्ट ऑफ डेट जो कॉस्ट ऑफ डेट इसमें कितना था इस क्वेश्चन? डिस्काउंट रेट कितना था डिस्काउंट रेट इसमें? याद है किसी को?
The discount rate, ऐसे इसमें कुछ नहीं दिया. Let's say discount rate is अपनी से बना. Discount rate is equal to 10%. चलें. 10%. Okay. Discount rate is 10%. Now, discount rate 10%. Now, what to do now? 1300 divided by 10%. Why? Why are you using the same formula of a perpetuity or perpetual bond? इधर n given है तो को फॉर्मूला यूज करेंगे 1 plus हाँ n given है ना, वहाँ पे तो n नहीं था ना, ये तो आपको समझाने की कोशिश करूँ, वहाँ पे n नहीं था तो आप ये इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर n given है, you know n, you know it is for 5 years, so if it is for 5 years, so what can I do with this? What can I do with this? जल्दी से मुझे बताएं ताकि नहीं आ तो फिर आपको Discount rate for 5 years. discount rate for 5 years, discount what for 5 years? Discount what for 5 years? 1 plus I raised to power 1 plus I raised to power of n तो कर दूंगा, लेकिन किसको डिस्काउंट करूं? जो लास्ट में जो लास्ट में, नहीं इन सबको ऐड इन सबको. yes 1300 देखें पूरे 1300 को क्यों सब फिर गलती कर रहे हैं. कूपन है कूपन 13 है, लेकिन कब कब मिल रहा है मुझे? साल के end में साल के एंड पे कब मिल रहा है? 500 months कब मिल रहा है? पहले साल, दूसरे फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे. तो अगर मैं इसको डिस्काउंट करूंगा, so what would I do? for 1 year. For 1 year. इसको डिस्काउंट करूंगा 2 years. for 2 years. इसको डिस्काउंट करूंगा for 3. इसको 4. इसको 5. 5. इसको 2 है ना यहाँ पे. yes sir इसको 5 और इसको 6 years. 5. why 6 years? Is it 6 years? It is at the same 5 years. So इसको भी 5. इसको भी 5. yes अच्छा. इसको डिस्काउंट 1. इसको डिस्काउंट 2. इसको डिस्काउंट 3. इसको डिस्काउंट 4. इसको डिस्काउंट 5 और इसको भी डिस्काउंट 5. सही है? अब अगर ये 20 इयर्स का बॉन्ड होगा तो आप किस तरह करेंगे? 20 इयर्स तक आप चीजों को डिस्काउंट करेंगे. नहीं. So what will you do? What will you do? How will you do it? Summation वाले formula use कौन सा फॉर्मूला? summation. ये क्या चीज बन रही है? 60 60 60 60 Annuity. एन्युटी. तो एन्युटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करें. सिंपल. दिस मेक्स एन एन्युटी. Ordinary or due? ordinary Ordinary. So this makes an annuity. Ordinary annuity. So I need to find out present value of annuity. ये यहाँ पे भी लिखा है. चलो देख लेते हैं इसको. और ये क्या है? maturity rate हाँ, maturity value है. ये क्या है? Simple compound. simple Compound of compound discount discount. इसको simple discount. So one is an annuity, and the maturity value would be simple discount. So annuity का formula. Annuity का formula क्या होता है? R into R and 2 PVIFA PVIFA I and N. yes Okay. R in this case is what? 60. 60. PVIFA for IN. What is I? 10%. 10% I 10%. इन्होंने दिया था. discount दिया 10% दिया था. Okay. I 10% and N 5 5. What about this maturity value? 1 plus I power n. 1 plus I raised to power of N. Yes. क्या करें? 1000 multiply PVIF once again 10% 5. यही होगा? yes ठीक. यहाँ पे इसका फैक्टर, यहाँ पे इसका फैक्टर, और आखिर में इन दोनों को 8. ऐड कर देंगे. अब और से so I divided by 1 plus k to the power of 1. This is for the first one. Plus I divided by 1 plus k to the power of 2. Second one. Plus I divided by 1 plus k to the power of 3. Third. 4, 5, 6 जितने भी years हैं up to n. लेकिन n पे there would be I and maturity value. दोनों चीजें. So if we only take this I, it looks like an annuity. ये प्लस मेच्योरिटी वैल्यू वाला. तो इसका मतलब कि whenever you have a bond and you want to find out the intrinsic value, you need to make the coupon payments as annuity and the maturity value as a simple discount. You add them both, the present value, and you will get the value of the bond. सही है? कैलकुलेट करें आप. फॉर्मूला का समझ आ गया? फॉर्मूला किस तरह बनाए? ओके.
Bond C has a 1000 face value and provides an 8% annual coupon for 30 years. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the coupon now? Calculate class. Calculate, come on. Calculate class. Start calculating. $1,000 face value and provides an 8% annual coupon. G class. So 1000 and 8% annual coupon. So that would make 80? 80? Come on, quickly. G class. Yes, sir. 80? So 80 is what? 80 is your NVT. Year end. R. 80 is your R. Okay? So you are getting 80 as your coupon, and then what to do? Timeline money. Timeline running की जरूरत है? Simple as why waste time? ठीक है. बस पता है कि ये फॉर्मूला है ना? Yes, इस sir. फॉर्मूले के अंदर पुट करें 80. 80 multiply by PVIFA PVIFA for what? or 8% 30. 30 years. 10% discount करेंगे. देखिए इसलिए कह रहा हूँ आप ये गलती करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में दो रेट्स गिवन होते हैं वन इज कूपन रेट वन इज डिस्काउंट रेट बोथ आर डिफरेंट जब से क्लास शुरू हुई है तो आपको बता रहा हूँ दे आर डिफरेंट दे आर डिफरेंट दे आर डिफरेंट आप ये गलती एग्जाम में करेंगे यू विल लूज मार्क्स एंड देन यू विल से सर पेपर मुश्किल बना है ठीक है ओके सो दिस विल बी 10% एंड दिस विल बी कितने इयर्स का 30 years ठीक find out the factor go to the table and find out the factor okay so let's go to the table this is the table page किसी को याद है नहीं याद okay rotate which table 4 BVIF is table number 4 so let's move to table number 4 and it says 10% and 30 10% 30 किधर है यार नीचे ये 10% ये 30 है और इसमें 10% किधर आ गया यार 10 ये सही है 9.427 चेक कर लीजिए is this the one 9.427 is this the one देख लीजिए ये वाला Yes, sir. यही है Yes, sir. 10% भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है Yes. Yes. okay 9.427 is the factor so 9.427 into 80 754.16 now this is the present value of all the coupon payments which we are receiving every year for 30 years. 30 years every year at the end of every year for 30 years ये तो एक चीज होगी then at the end of 30 year you will also get maturity value so plus maturity value how much 1000. 1000 80. into PVIF. PVIF and And 10%. and 10% And KD 10% and 30 years. 30 so go to PVIF table where is PVIF table table number PVIF class table number Second. Yeah. second okay second 10% and 30 yeah 0.057 check it Yes. 0.057 so 1000 into 0.057 this will be equal to 57 so what is the intrinsic value of the bond what is the intrinsic value of the bond 811.16. 811.16 सबका यही आ रहा है चेक कर लीजिए let's check your answers 811.16 सही है सही क्लास Yes. आसान था Yes, sir. this is how to find out the how to find out the intrinsic value of a non-zero coupon paying bond non-zero ठीक है now let's talk about zero coupon paying bond let's talk about zero coupon bond now what does the zero coupon bond mean
What does the zero coupon bond Annual mean? interest payment is There is no coupon, which means you are not getting any interest. So if you are not getting any interest, what will you do? What will you get? What will you get? premium. Premium. मतलब maturity value उसकी जो Maturity value कब मिलती है? जो bond expire हो जाए. जब बॉन्ड मेच्योर हो जाए. लेट्स से बॉन्ड 5 साल का 0 1 2 3 4 5. ठीक, लेट्स से ये बॉन्ड. तो फिर पहले ईयर मुझे क्या मिलेगा? कुछ ही है. कुछ नहीं. दूसरे ईयर, कुछ नहीं. तीसरे ईयर, कुछ नहीं. चौथे ईयर, नहीं. पांचवें ईयर. Maturity Maturity value, which is 1000. 1000. If you need to find out the intrinsic value of the bond, what will you do? Simple. इसको डिस्काउंट कर लो. 5 years. इसको डिस्काउंट करेंगे तो कितना आएगा? Let's say the same figure. 10% 5 years. और 5 years. 10% कितना आ जाएगा? ओके जी, कितना आएगा? Find it out. How will you find out by the way? 500 1000 into 1 plus I into divided by 1 plus I whole power. 1 plus I. I is equal to 10% raised to power 5. So it will be equal to what? Whole power. It will be equal to what? 620.92. 620.92. 620.92 is the intrinsic value of this bond. लेकिन यार ये कैसा बॉन्ड है? आप इसमें को मुझे 1000 रुपए दे और मैं आपको 5 साल बाद 1000 रुपए वापस कर दूं, तो आपको फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं. नुकसान कुछ भी नहीं. तो फिर is it possible? No, sir. नहीं. तो फिर what will happen? मतलब तो प्रेजेंट वैल्यू अगर कम होगी तो फिर हम खरीदेंगे. कम. अगर वो हम Maturity भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं थी. मेच्योरिटी ज्यादा क्यों देगा? आपने तो अभी रूल पढ़ा है कि मेच्योरिटी वैल्यू कहते ही उसे हैं कि जो फेस वैल्यू होती है और जो आपको मेच्योरिटी में मिलती है उसको मेच्योरिटी वैल्यू कहेंगे. अगर 1000 रुपए का बॉन्ड है तो आप 1000 देंगे. वो 1000 से ज्यादा क्यों देगा? फिर वो हमें बॉन्ड डिस्काउंट मिलेगा. Exactly. So that means when you are buying the bond, when you are actually purchasing it, so you will not buy it for rupees 1000. फिर फायदा क्या हुआ? आप 1000 दें और वो आपसे 30 साल बाद, let's say it's a 30 years bond, 30 साल बाद आपको 1000 रुपए वापस दें. Does that make any sense? नहीं. It does not make any sense. So that bond must be issued at a discount. For example, it will be issued for rupees 600. वो आपसे कहेगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा 1000 रुपए दो और ये बॉन्ड ले लो. वो आपसे कहेगा 600 रुपए दो, ये बॉन्ड ले लो. आप कैलकुलेशन करते हैं, आप कहते हैं हाँ मेच्योरिटी पे जो पैसे मिलेंगे 1000 वो आज के दिन बराबर है 620 रुपए के, according to the cost of debt or the discount rate or capitalization. And you will say yes, that's a good deal. 20 रुपए का माना. Got the idea? Yes. So non-zero coupon paying bonds, you will not buy at par. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तीन चीजें होती हैं. One is called Face. at par or at face value. One is called at Premium. discount and the other one is called at premium. Okay. So at par would mean that you will buy it for rupees par. At par, face, 1000. At discount means you will buy it lower. less than 1000. And at premium means you will buy more. Got the idea? Yes. Zero coupon paying bond का idea clear हो गया? A zero coupon bond is a bond that pays no interest, no coupon, but sells at a deep discount from its face value. So it will be sold at a discount. Why? Because there is then no point. अगर वो 1000 के बिकेगा तो फिर आपको फायदा बीच में कहाँ से आएगा? कोई नहीं है, तो it will be sold at a discount. It provides compensation to investors in the form of price increase. ठीक है? How would you find out the value? Value equals simply maturity value divided by 1 plus KD ratio. Simple. ठीक है? अगर टेबल इस्तेमाल करेंगे तो maturity value into PVIF KD. सही? Got the idea? So now we've done perpetual bond. We've done bond with zero coupon. We've done bond with non-zero coupon. सारा clear?
Everything is clear? Okay, let's move on. इस क्वेश्चन को करें, then we'll take a small break. 2 minutes. Bond Z has a 1000 face value at 30-year life. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the zero coupon bond? J. Come on, calculate class. $57.30. How did you find out? Face value. It's a simple formula: face value or maturity value divided by 1 plus KD. KD equals 10% raised to power of 30. n, which is 30. So this is equal to 57.30. 57.30. 57. मैंने आपसे कहा टेबल और उसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है. They must have used table. इसने टेबल से ठीक है. सही है? Clear? Clear class? Clear है? Okay. So let's take a 2 minutes break and then we'll continue. Pause करते हैं इसको दोबारा. Okay. So let's continue. Now we've talked about perpetual bond, which has no life, goes on forever. We've talked about bond which gives zero coupon, no interest given to you. Okay. We've talked about bond which gives you some coupon, non-zero. Now let's talk about bonds which will give you a coupon, but the rate would be, the compounding would be semi-annual. ठीक है? Bond which will give you a coupon. ठीक? यहाँ पे coupon कितना था? Sorry, इस पे, इस पर. The coupon was how much? 80. उस साइड पे. Rate, coupon rate. 8%. 8%. 8% coupon rate. लेकिन उसके साथ देखो ना कि 8%. Let's go back to that question and find out what was written over there. Let's see what was written over there. It said 8% annual coupon. 8% annual coupon. अगर मैं इसको कर दूं semi annual coupon. 8% semi annual. तो फिर उस साल में 2 दफा. साल में 2 दफा. तो फिर 4%. थोड़ा ज्यादा आएगा. 8%. याद नहीं आ रहा कुछ. डिपेंड वाला इंटरेस्ट रेट जो है I divided by n into power n into. याद आया? यस सर. याद आया? वो हम उसमें क्या करते थे? 1 plus I I divided by M m M और n multiply by. याद आ गया? यस. याद आ गया? अब यहाँ पर क्या करें? अब यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर भी क्या? n into. क्या करूँ? 10 divided by 2 ना 8% divided by 2 8% divided by 2. 10%. नहीं सर 8% जो है सीनियर के लिए 10% तो नहीं है डिस्काउंट रेट. जी नहीं. देखें 8% सेमी एनुअल है. 10% is your डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट तो वो है जो आप डिस्काउंटिंग करते हैं, उस पे तो चेंज कोई नहीं आया. चेंज तो आया उस रेट में जो कि आपको पैसे ऑर्गेनाइजेशन पे करती है. पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन पे करती थी साल में एक बार, अब आपको पे करेगी 2 बार. तो अब अगर 2 बार, पहले एक बार पे करती थी 80 रुपीस पे करती थी साल में, अब जब 2 बार पे करेगी कितना पे करेगी? 40 रुपए पे करेगी. ठीक. सो दैट मींस 8% divided by 2 this, where is the formula? There is the formula. डायरेक्ट किया था. ये फॉर्मूला. ठीक है. सो दिस I Coupon rate. 8%. would be divided by 2. आई नहीं सर इनका जो इंटरेस्ट रेट है जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो इंटरेस्ट रेट अगर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो फिर n जो है n मल्टीप्लाई बाय 2 n मल्टीप्लाई बाय 2. इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 2 n मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. ओके जी. सो इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 2, इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 2, n मल्टीप्लाई बाय 2, kd डिवाइड बाय 2. ठीक है. kd kd क्यों किया? गुड क्वेश्चन. kd क्यों किया? kd किधर आता है? kd आता है इधर ना. kd आता है ये इधर. ठीक है.
KD तरह है, it's semi-annual compounding, semi-annual compounding, ठीक है? Semi-annual compounding that means every year you are getting it twice. Every year you are getting it twice. So if you are getting it twice for every year, so that means your periods 6 months. Your periods double. Yes. Double ना? So n multiply by 2. ठीक है? Your periods ज़्यादा हो जाएगा ना? पहले आपको 5 साल था तो 5 दफा मिलता था आपको. Yes. अब आपको मिलेंगे 10 बार. तो n को multiply by 2 कर देंगे. ये भी क्लियर हो गया? Yes. पहले आप जब इसको डिस्काउंट करते थे, ठीक है, तो आप डिस्काउंट करते थे इस तरीके से डिस्काउंट करते हैं, ठीक है, आप 100 को डिस्काउंट करते थे. 100 आपको कब मिलता था? साल के आखिर में. अब आपको कब मिलेगा? 6 महीने बाद. 6 महीने बाद. 50 और 6 महीने. तो 6 महीने बाद मिलेगा. तो जब अगर 6 महीने बाद मिलेगा और मैं उसको फुल करूं तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा ना. मतलब डिस्काउंट भी आप करेंगे सेगमेंट. डिवाइड KD by 2 मल्टीप्लाई n by 2 डिवाइड I by 2. सही है? 8%. अब ऐसा ना हो कि आप जल्दी में कहेंगे बस यार सबको डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, इसको भी डिवाइड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको डिवाइड बाय 2, ऐसे ना हो इसको डिवाइड बाय 2 कर दे. मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 2 नहीं करनी, ना मल्टीप्लाई बाय 2 करनी है. मैच्योरिटी तो वही मिल रही है ना. मैच्योरिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है? पीरियड ज्यादा हो गया, पीरियड कम हो गया, कंपाउंडिंग ज्यादा हो गई, कंपाउंडिंग कम हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस विल रिमेन एज इट इज. सही है? क्लियर है? क्लियर क्लास? क्लियर? ओके, लेट्स सॉल्व दिस वन. नहीं सॉरी, ये तो हम कर चुके हैं. सेमी-एनुअल, दिस इज सेमी-एनुअल कंपाउंड. ओके, सेमी-एनुअल कंपाउंड. लेट्स सॉल्व दिस वन. Bond C has a 1000 face value and provides an 8% semi-annual coupon. This is how you will find out कि this is not annual coupon. ठीक है? और अगर semi-annual की बजाय मैं quarterly coupon कर दूं फिर 4 divide by 4 multiply by 4. Okay, semi-annual coupon for 15 years. The appropriate discount rate is 10% annual rate. Appropriate discount rate is 10% annual rate. So now this 10% is annual. ठीक है? 10% एनुअल है ना. तो मैंने कहा जब वो ज्यादा हो गया तो उसको भी डिवाइड बाय 2 कर देना. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कूपन बॉन्ड? जी क्लास क्विकली सर वो 40 आ जाएगा कूपन. कैलकुलेट जल्दी. वी ओनली हैव 5 मिनट्स. इसके बाद एक और चीज भेज दी. 8% डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1000. करें G class. Come on. It's easy. Your coupon is 8%. So if you divide 8% by 2, it will become 4%. So 4% multiplied by 1000. 1000 will be 40. Okay. This is 40 into PVIFA. I is equal to KD. KD is equal to 10%. So 10%, Divide by which will be equal to 5%, yes. and And 15 multiplied by 2 to 30. 15 years Yes. multiplied by 2, 30. सही है? Yes. ये सही है? Yes. ये सही है? ये 40 डिवाइड नहीं करेंगे 2 से. ये 40 डिवाइड नहीं करेंगे 2 से. जी क्लास. वो तो ऊपर कर लिया. एक चीज रहती है उसको भी कर लेते हैं. Plus G. Next one is maturity value. So maturity value is how much? 1000. 1000. So 1000 divided by 2? No sir. No? Okay, 1000 into PVIF. PVIF, KD, Sir. 5%, 10% divided by 2, 5%, Yes. and multiply by 2, 30. यही आ रहा है? यही आ रहा है क्लास? यही है? क्लास यही है? फिगर्स देखें जल्दी से. वैल्यूज देखें इनकी जल्दी से टेबल्स में. वैल्यू देखें. Yes, yes. Okay, so let's go to table. Let's go to table. Let's do it quickly. We don't have enough time. PVIF. PVIF में कौन सा फैक्टर देखना है? 5%. 5% and
30. 30. 5%, 30. 0.231? 231. 0.231. This is the one, no? 0.231. So plus 1000 into 0.231. Now PVIFA. Table number 4. 4. Let's go to table number 4. PVIFA. 5% and 30. 30. This is 5. Yes. And where is 30? 30. 15.373. G, give me the figures. 845.92. 8 full? Yes, full. अच्छा पहले इसका बताएं. 614.92. 614.92 92. plus 231. 231 equals 8 845.92. 9 2. चेक कर लीजिए सर. यही है? सही है? Yes. क्लियर है? सही है क्लास? Yes. 845.92. Okay. Last thing before we sign off today. Last thing. चलिए इसको और से देखें last thing. Let us use another worksheet on your calculator to solve this problem. Assume that bond C was purchased settlement date on 12/31/2000. अब वो आपको number of years नहीं बताया, अब वो dates आपको बताया, ठीक है? Keep the dates in mind. 12. अच्छा आपने इस स्टाइल से लिख देना 31/12/2000. So this means 31st December. December ना? Yes. यहाँ पे आपने परचेज किया. मैच्योर कब हो रहा है? 31st December And 2015. will be redeemed on. Redeem का क्या मतलब होता है? Mature. Redeem का मतलब क्या? वापस वापस आएगा. तो इसका मतलब मैच्योर हो. ठीक है? तो words आप देख लें, words have changed. तो अगर वर्ड्स चेंज हो गए एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या होता है. इसका मतलब क्या है सर? और सर क्लास में लोग सर इसका मतलब क्या होता है? रिडीम ऑन 12/31/2015. 15 years हो गए. 50 कितने इयर्स हो गए? 15. तो आप देखें एक ये तरीका है. इससे पहले ये था कि आपको नंबर ऑफ इयर्स दिया था, एक ये है कि आपको डेट्स दे दी. अब आगे देखिए एक और तरीका है. दिस इज आइडेंटिकल टू द 15-year पीरियड. ये भी हो गया. वी डिस्कस फॉर बॉन्ड. What is its percent of par? ये समझाया है थोड़ी देर पहले. थोड़ी देर पहले समझाया. पार क्या होता है? फेस कितना है? वो फाइन कितना है? पार कितना है? इसमें तो नहीं है। Yes, we do. ये पेश लेकर करते लिखती हो. नहीं, इसी एग्जाम्पल में लें. जी क्लास. इसमें तो वैल्यूज ही नहीं है। वैल्यूज ही नहीं गिवन. आपसे क्या कहा था जब पढ़ा रहा था कि बॉन्ड हमेशा यूएस में कितने का होता है? 1000. तो दियो ना दियो, फेस वैल्यू कितनी है? 1000. मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 1000. चाहे दियो चाहे ना दी. वापस आए क्वेश्चन. ओके, सो परसेंट ऑफ पार. परसेंट ऑफ पार. परसेंट ऑफ पार. पहले ये बताएं, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो ये बता रहा है कि ये कैलकुलेट करो, ये वही है जो हमने पीछे थोड़ी देर पहले की है. ये यही कैलकुलेशन है. इसकी फिगर चेक करें. इसमें n कितना है? 15 years 15. बाकी सारी चीजें वही सेम है. बाकी सारी चीजें सेम है. डिस्काउंट रेट, कूपन रेट, सेमी एनुअल, सब कुछ सेम. लेट्स से सब कुछ सेम. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कितनी होगी? लेट्स से ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये डेट्स गिवन है. इस डेट के मुताबिक व्हाट विल बी दी एन, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड. ये भी सेमीएनुअल है. हाँ, पहले तो टाइम पीरियड होता है ना. पहले एक ही चीज से व्हाट इज द टाइम पीरियड हो गया? 15 years. 15. Let's say if I tell you rest of the data is the same as the previous example. Previous example में बाकी चीजें क्या थी? 5.5 30.
30 ये 15 था हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था मल्टीप्लाई बाय 2 देना तो 15 ये भी 15 है तो ये 30 में जाएगा तो सेमी एनुअल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा Yes. केडी सेम यस केडी कितना था 10% 10% डिवाइड बाय 2 हो गया ये भी सेम हो गया इसका आंसर क्या आएगा सेम सेम आएगा सब कुछ सेम है ना Yes. सब कुछ सेम आएगा आंसर क्या है इसका वेल कितनी है 845 पार कितना है पार फॉर 1000 पार 1000 तो परसेंट कितना बना 1000 minus 1000 minus 845.92 divided by ये सेकंड हो गया 1000 845 divided by 1000 हाँ कितना बना इसमें इतना सोचने की क्या चीज है सोचने की कोई बात ही नहीं है 845.92 ये है 1000 इसका वो है इसमें डिवाइड करेंगे आ जाएगा डायरेक्ट इसमें तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं परसेंट पर मंथ कि वो पार का कितना परसेंट है उसकी वैल्यू पार का कितना परसेंट है पार 1000 होता है पार हमेशा 1000 प्रेजेंट वैल्यू मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू प्रेजेंट का नाम ना है प्रेजेंट वैल्यू लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइड बाय पार वैल्यू 845.84.59 आगे देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 16% वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वैल्यू व्हाट इज वैल्यू 845 845.92 यस ठीक है ये वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं अब गौर से देखिए एक तो ये तरीका हो गया यस एक ये तरीका हो गया कि अगर आपको परसेंट ऑफ पार मिल गिवन सो परसेंट ऑफ पार मल्टीप्लाई विद पार और फेस वैल्यू would give you वैल्यू ऑफ the द बॉन्ड intrinsic value. Okay, that's it class. बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास ठीक है।